राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलोंगेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड इनिशिएशन हो गई है। नाउ यू आर गोइंग टू elongate the mRNA transcript that is being produced. So the polymerase enzyme moves along one of the two exposed DNA strands in a 3 to 5 prime direction. Make sure you remember this, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In a 3 to 5 prime direction, और हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि 5 prime to 3 prime mRNA synthesize होता है, तो this must move in a 3 prime to 5 prime direction. This strand is called the template strand. The polymerase reads each base in the template DNA strand and attaches a complementary RNA nucleotide. इसकी हमने बात शुरू शुरू में की थी कि अगर आपके template strand पे G है तो आपके RNA में उसका complementary C आएगा। इसी तरह से अगर आपके template strand पे A है तो आपके complementary RNA strand में उसकी complementary nucleotide U आएगी। ठीक है ना, which grows from 5 prime to 3 prime. Like the strands of a DNA double helix, the template DNA and the RNA transcripts are anti-parallel. And RNA strands have the base uracil instead of the base thymine.